माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, Please, papers to be laid on the table. श्री जितिन प्रसाद। माननीय उपसभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। श्री रामनाथ ठाकुर। सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। डॉक्टर एल मुरुगन। Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1C in today's revised list of business pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you. श्री कमलेश पासवान। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 1 के खंड घ पर अपने नाम के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूं। श्री रवनीत सिंह। Respected sir, I raise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1E in today's revised list of business. श्री भूपति राजू श्रीनिवास शर्मा। Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to Ministry of Steel mentioned against my name बीच में बात न करें। at serial number 1F in the revised list of business for today, the 1st August 2025. Thank you. श्री पवित्र मार्गेरिटा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची के अनुसार क्रम संख्या 1G पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित कागजातों को सदन के पटल पर रखता हूं। स्टेटमेंट्स बाय मिनिस्टर्स। श्री कमलेश पासवान। महोदय, आपकी अनुमति से मैं ग्रामीण विकास पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट तथा छठी रिपोर्ट में निहित अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति दर्शाने वाले वक्तव्यों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। यह रिपोर्ट भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की अनुदान मांगों से संबंधित है, जो आज की संशोधित कार्यसूची क्रमांक संख्या 2(1) में उल्लिखित है। श्री रवनीत सिंह। Respected sir, with your kind permission, I rise to make a statement on the status of implementation of the recommendation contained in the third report of the Standing Committee on Railways, 18th Lok Sabha on demands for grants 2025-26 of the Ministry of Railways, led in Rajya Sabha on 10/3/2025. A statement showing implementation status of all the recommendations contained in the report is enclosed. Since the statement is voluminous, I request that the same may be taken as read. Thank you. Statement regarding government business. Dr. L. Murugan. Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business during the week commencing Monday, the 4th August 2025, will inter alia consist of 1. Consideration of any items of the government business carried over from today's order paper. It contains discussion on resolution seeking approval for extension of presidential rule in the state of Manipur for a further period of 6 months with effect from 13th August 2025 under Article 356 Class 4 of the Constitution of India, and further consideration and passing of the carriages of goods by sea bill 2025 as passed by Lok Sabha. Number 2, consideration and passing of the coastal shipping bill 2025 as passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the following bills after they are considered and passed by Lok Sabha. Number 1, the readjustment of representation of scheduled tribes in Assembly Constituency of the State of Goa Bill 2024, the Merchant Shipping Bill 2024, the Indian Ports Bill 2025, the National Sports Governance Bill 2025, and the National Anti-Doping Amendment Bill 2025. Number 4, consideration and return of the Manipur Goods and Service Tax Amendments Bill 2025 after it is introduced and considered and passed by Lok Sabha to replace an ordinance. Number 5, consideration and return of the appropriation bill relating to demands for grants Manipur for the year 2025-26 after it is introduced, considered and passed by the Lok Sabha subsequent to representation and laying concerned demands for grants. Thank you. Thank you.